उसका समरी सेंड हाँ किया था सर, मैंने बुक सेंड करने आया। समरी कितने लोगों ने देखा उसका? सर मैं ही देखा सर। आपको वो सर चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। दो। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान दो पहली बात तो। So we have done we have done not, we have done anybody, right? Anybody, anything, anyone, anywhere, anytime, right? We have done this one. So last one is remaining, that nobody, no one, right? Nobody, no one, nothing, etc. So now we are going to go for the last one, and that's what? No. Today is 19th of October 2020. So here we go. See, I've sent you the summary of that video, of that book, because I know, well, because you are the people who are not going to read the book, but still I'm going to give you a book, but later I'll be giving you a book which is really amazing book to read. All right, so today we are going to do with not, means what? Nobody. Okay, have you done sentences with nobody? No, Hello? sir. No, we haven't finished, right? So we are going to make sentences with nobody and no one. No one, I think we have finished, right? No one. Have we finished this no one, nobody? अरे भाई कहाँ हैं आप लोग? आंसर ही नहीं दे रहा है कोई. Have we finished nobody, no one? No one. नहीं, शायद नहीं हुआ नहीं हुआ शायद. No, sir. We have बोलो तो finished सही, none. आज आप लोग तो एकदम बिल्कुल ही खामोश पड़े हैं यार. चलो भाई, next one. Now we are going to have here difference between saw, seen, and watch. Okay, did I answer this last time? Yes, sir. I think No, sir. I have given you the answer for see, Look and watch. look, and watch. Yes or no? Yes, sir. What's the difference between them? Who can tell me? What's the difference between see, look, and watch? See मतलब देखना, look मतलब देखना, watch मतलब देखना. But what's the difference between them? Who can tell me? So watch सर वॉच है ना सर, Sir, the things which come suddenly in front of our eyes. So in that condition, we use see. Look. Look, we use for बताने का सर. concentration. मैंने आपको इसका आंसर नहीं दिया टीवी कभी? के टाइम पे हाँ दिए सर, इससे पहले पूछे भी थे और बोले भी थे सर. Okay, Sir, have in a look, look we here. intentionally see something. Okay. Now we are using see for general things. Remember this. For generally we use their see. For example, see. देखना. Yeah, I saw an advertisement. हाँ मैंने देखा था. But ऐसे गौर से देखा था क्या? नहीं. See we are using for general things. Remember this. Now watch. Watch we are using for concentration. For example, I watch videos. So watch videos means what? पूरे ध्यान से देखता हूँ. ऐसा कि वीडियो चल रही है. हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे थे आप? अरे बाड़े में गए हो, क्या बोल रहे थे, बोलो. No. Watch we are using for concentration. Yes or no? Yes, sir. That's why we use it. Watch. For same example, watchman. Do we say look man? No. Do we say see man? No, sir. We say watchman. Why? Because he watches. He keeps vigil with concentration. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? Yes or no? So watch we are using for concentration. See we are using for general things. आमतौर पे, yeah, I saw him. Did you see Mubashir? Yeah, I saw him in Pune College. Did you see Adnan? Yeah, I saw him in Kondwa. So this is what see means. What normal things के लिए लगता है see. And look we are using for order and for request Request. or for some kind of intention. कोई इरादे से हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे look. For example, please have a look. यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पे देखिए. तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. Why are you looking at me? मैं आपको सामने वाले को चिढ़कर पूछ रहा हूँ, इंटेंशनली क्यों देख रहा है भाई तू इसके ऊपर. So this is what look we are using for order and request, for intention, and see we are using for general things. Normal चीज. Did you see my wallet? आपने मेरा wallet देखा था क्या? गौर से देखा था क्या आपने मेरा wallet? तो आप लोग किसी को नहीं बोलेंगे did you watch my wallet. We can say that did you see my wallet. Next one, watch we are using for concentration. Yeah, last night I watched a movie. Yeah, the day before yesterday I watched a movie. So watch we are using for concentration. Seen. Seen is the past form of see. See, second form is saw, and third form is seen. Sir, for moving object, we use watch.
Pardon? For moving objects? We use watch. For moving object, we use watch. Okay. Watchman. Watch. I'm watching a movie. I'm watching a. I was watching. Please keep a watch. Okay, madam. Let's have one question for you. Please keep a watch on the gates. ये सेंटेंस ऐसा क्यों है फिर? गेट तो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है. Please keep a watch on the gate on the cupboard. Cupboard is not a moving object. Gate is not a moving object. Because we are using watch for concentration. That's it. Simple सा आंसर है उसका. आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं. फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं. हाँ, बात समझ सकते हैं हम लोग. मूवी के अंदर पिक्चर्स मूव होते हैं, वीडियो के अंदर पिक्चर्स मूव होते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड. बट why do we say please keep a watch on the gate, please keep a watch on the cupboard? Watchman, please keep a watch on the gates. Why do we say For watch? Concentration. That's it. Simple सा आंसर है मैम उसका. So my dear students, oh my god, dear बोलने के लिए मुझे डर लग रहा है. मजाक कर रहा हूँ. I'm not going to feel like this because see, even darling, my professors used to use. When I was in Germany, my professors used to use the word darling. और अपने यहाँ पे डार्लिंग बोले तो बाप रे, तुम लोग का कुछ तो रहेगा. डार्लिंग बोले उसने उसको. अल्लाह अकबर, बाप रे. मेंटालिटी. अब मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहूंगा. मैं आस्क यू वन क्वेश्चन प्लीज. इस महीने में कुछ है और मैं लोगों के पोस्ट देखता आ रहा हूँ. सी, मैं किसी को पर्सनली नहीं जाऊंगा. आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन टू यू. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू. मेरे इंग्लिश से रिलेटेड है, इसके लिए पूछ रहा हूँ भाई. पूछूं? Yes, sir. पूछो Sure. सर, पूछो. आशिक का मतलब क्या होता है? क्या बातें कर रहे तुम भी सर? पढ़ा रहे कि आशिक बिशिक क्या बातें कर रहे? नहीं, रिलेटेड है, इसके लिए पूछ रहा हूं मैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आशिक? मैं आपको इसके जरिए कुछ सिखाना चाहता हूं इन माय इंग्लिश ओनली. यस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आशिक? Lover. प्यार Okay, करने very good boy. He is absolutely right. Lover. Can you please open the dictionary and check out the meaning of lover? Can you please open the dictionary and check out the meaning of lover? Let me do it now. Pay attention please. आप लोग के सामने चीर रन कर रहा हूं मैं किसी वर्ड का. वर्ड को समझने के लिए कोशिश कीजिए प्लीज. A partner in sexual or romantic relationship outside marriage is called lover. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके सामने मैंने रखा हूं. मेरे दिल से तो कुछ नहीं फेंका मैंने. फेंका क्या भाई? No, sir. गुड. यहाँ पे ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर. ओके, गुड. बात गलत नहीं है, बात सिर्फ वर्ड को समझने की और लैंग्वेज सीखने की. मैं लैंग्वेज टीचर हूँ, इसलिए मैं लैंग्वेज के अंदर डीप में जाकर देखता हूँ हर एक चीज को. नाउ लवर मीन्स व्हाट? आशिक. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. कैन यू से लाइक दिस? Is this correct? No. Yes. No, sir. आमिर भाई, शाकिर भाई, अदनान भाई, अब्दुल वाजिद भाई, गौस भाई, सानिया मैडम, मुबशिर भाई, No. आमिर भाई. Is this right? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे. No, sir. अच्छा ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, उसके अंदर आप लोग आंसर दे दीजिए. यस और नो. क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं मैं मेरी माँ का आशिक हूँ? प्लीज पोल कीजिए जल्दी जल्दी. चलो फटाफट 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 जल्दी. सबके पास से चाहिए मुझे. सबके पास से चाहिए. कितने लोग बोल सकते हैं हाँ ये सही है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं है? डन. मैं एंड कर रहा हूँ उसको. रिजल्ट्स अभी आप लोग के सामने होंगे इंशाल्लाह.
इसके अंदर से कुछ खतरनाक लोग हैं. Yes. 80% लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल सकते हैं, और 1% इंसान है, पता नहीं कौन है वो, अल्लाह बेहतर जाने. वो बोल रहा है इंसान कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि मैं मेरे माँ का आशिक हूँ. ओ माय गॉड, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कैसे बोल सकते तुम? मुझे एक बात बताइए, जब तुम माँ को अपनी लगा सकते नहीं है, मैं मेरी माँ का आशिक हूँ, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाते कैसे हैं फिर? तभी आशिकाने रसूल का शरबत पीने वाले फुकट के इस्तेमाल किया जाता है. धंधड़ 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 धंधड़. आप वर्ड क्या यूज कर रहे हैं वहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? No, sir. मेरे घर पे पहुंचना सही नहीं है है. सर. हम उनने बोला आपने कुछ, चलो उसके घर पे. बोला कैसे? आपके सामने रखा हूं मैंने, डिक्शनरी के अंदर चेक कर लो. आप लोग क्या वर्ड यूज करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? कहाँ हैं हम लोग? कहाँ हैं? आमिर भाई, आपके स्पीकर का प्रॉब्लम चल रहा है. ना आपकी आवाज आ रही है, ना मेरी आवाज जा रही है आपके पास. चलो, नाउ आई वांट यू टू मेक सेंटेंसेस विद नोबडी नो वन. फॉरगेट दैट. नोबडी नो वन. कैन यू प्लीज मेक सेंटेंसेस विद नोबडी नो वन? No one is perfect in the world. नेक्स्ट. Nobody should go to that haunted house. नेक्स्ट. Nobody has to come here. गुड. नेक्स्ट. नेक्स्ट. मुबशिर. गौस. चलो वाजिद भाई. Nobody, no one we are using for humans, okay? Yes, make sentences please. Nobody, no one. Nobody wants to join you. Next. Nobody has access to that drive. Next. Nobody can make noise. Good. Next. Nobody in the room. Good. Next. Nobody is in the room. Nobody is my house. Nobody is my house. Nobody is in my house. Next. Nobody is in the garden. Next. Nobody is perfect. Good. Next. Next. Nobody can join the meeting. Good. Next. Wajid bhai, make sentences. Nobody, no one. Nobody cares about you. Nobody is Good. my Next. friend. Nobody is my friend. Next. Next. No one can judge me. No one can judge me. Next. No one can see the sun with bare eyes. Good. Next. Nobody No one is can deal me. perfect in the world. Good. Yes, repeat once again. No one can deal me. No one can deal me. Good. Next. No one is perfect in the world. No one is perfect in the world. Yes, Gauss. सर बडी मीन्स क्या होता? इंसान के लिए बोलते हैं, आदमी को. हाय बॉडी. बॉडी बॉडी वहां से वर्ड आया बॉडी. नो बडी मीन्स नहीं ना? नहीं, कोई नहीं. Nobody is with me. Nobody is talking to me. Nobody is waiting for me. Yes. Nobody is willing to go. Very good. Next. Nobody have the courage to jump from the plane. Nobody has the courage. Okay. Be courage, the courage. Nobody has the courage. The courage, no sir. Yeah. The four vowels. Yeah. Next. Nobody came to help me. Nobody came to help me. Good. Next. No one cares how I feel. Very good. Next. No one can do it for me. Very good. Next. No one was there. Good. Next. Nobody No is. one trusts me. No one trusts me. Nobody is in the house. Nobody is in the house. Next. No one completed the homework.
No one completed the homework. Next. No one can purchase this villa. No one can purchase this villa. Next. No one can buy it. Class. Nobody Yes. teach us except you. Nobody teaches us except you. Next. Nobody. Nobody can make it. Nobody can make it perfect. Nobody can make it perfect. All right. Now I want you to make sentences with nowhere. When do we use nowhere? कहीं तो भी For places. कहीं नहीं. Nowhere. कहीं नहीं. Nowhere. I can go nowhere. I find it nowhere. मुझे कहीं भी नहीं मिला वो. Yes. Sir, nowhere is singular or plural? Singular. And Nowhere. sir, everywhere? Singular. Okay. Nowhere sunset. Nowhere sunsets. Amazing. Sir, how can we identify that it is singular or plural? Simple. See, let me ask you one more question. As we have discussed before, that day I asked you one question, and it was what? Singular or plural? Before starting this determiners topic. See here. Everybody, singular. Anybody, singular. Everyone, singular. Anyone, singular. Here it is the note which is written clearly in the document. Also, anybody, nobody, everybody, either, neither, each, and every. Every is there, right? And the word which is containing every, come kar do usko. So sorry. So the word which is containing every का मतलब ही singular होता है. Every का मतलब ही singular होता है. If you are saying every place, everywhere, nowhere, all these are words singular. Every time means what was a single time. For a single time. Every time he does the same mistake. Means every time मतलब नहीं हर एक बार. So every means what? Singular. Singular. So And sir, none none? are, pardon? And sir, none is singular or plural? See, anybody, nobody, everybody, either, neither, each, every, none are distributive adjectives and pronouns. They must be used with verbs and pronouns in the Singular. none is also singular, every is singular, each singular, either singular, neither singular, everybody singular, nobody singular, anybody singular, everything is singular. Singular. Sir, if we are making sentences, so we can say like this, none stone is there. None stone is there, correct. None stone is there. See, everybody must have his book. Everybody must have his book. अभी जो शाकिर भाई ने थोड़ा सेंटेंस बनाया था वो गलत बनाया था. He said that. आपका सेंटेंस क्या था वो? करेज वाला. Nobody has have the courage बोला था शायद मैंने. Nobody. He said nobody have the courage, जो कि बिल्कुल ही गलत है. Nobody have the courage. दिख रहा है वहाँ पे आपको underline दिख रहा है. Are you seeing the underline under that have? But Actually, it in must be body and nobody. one, we can identify that it is singular. But with everywhere, nowhere. So in that case, Simple. See. Nowhere ये आपको अभी समझना पड़ेगा. समझने के लिए और वहाँ पे कोई चारा नहीं है हमारे पास में, कोई सिस्टम तो है नहीं जो हमको समझाएगा. But वहाँ पे सिंपल सा रूल है that the word, these are the words, all these are words are singular. Now let me ask you one more question. That how will you identify that datum is singular only? How will you identify that pen is singular only? कैसे समझेगा हमारे को? हमारे पास कोई सिस्टम तो नहीं. वो सिंगुलर है, उसका रूल ही वही है कि भाई वो सिंगुलर है. उसको समझने के लिए हमारे पास में कोई दूसरा रूल नहीं है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम लोग देखेंगे नोवेयर, इसका प्लूरल क्या होता है? Nowhere. सेम केस Any plural. होता ही नहीं है. फिजिक्स का प्लूरल क्या होता है? Singular, sir. Physics. ऑब्वियसली वो सिंगुलर ही है और सिंगुलर ही रहेगा हमेशा. उसका कोई प्लूरल ही नहीं है. सो हियर इट इज द रूल which is saying every is what? The word which is singular.
either singular, neither, singular, each, singular, ये ऑलरेडी सिंगुलर है, उसको पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं हम लोगों को. आया तो समझ लेने का प्लूरल करने की जरूरत ही नहीं है ना. क्या जरूरत है प्लूरल करने की उसको? मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्लूरल करने की जरूरत भी नहीं है, और वो है भी वैसे भी सिंगुलर ही वो. Plural कोई wing. प्रॉब्लम. Okay, can you please make some sentences with nowhere? Nowhere. I found it nowhere. You can go nowhere. Nowhere के अंदर ऑलरेडी नॉट आ रहा है, नो आ रहा है, तो वहां पे डबल नॉट वाला सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है. Yes, continue. Nowhere. This road goes nowhere. This road goes nowhere. Next. Nowhere, my friend. I find my friend nowhere. You can't hide nowhere. You can't hide nowhere. ये गलत हो गया. अभी मैंने क्या बोला था? हाँ. Nowhere के अंदर ऑलरेडी नॉट आ रहा है, नो आ रहा है, तो आप उसके साथ में You can नेगेटिव. hide nowhere. करेक्ट. यू कैन हाइड nowhere. आप कहीं नहीं छुप सकते. यू कैन हाइड nowhere. चलो. I Continue. found nowhere. Very good. Next. I'm fatigued. I can go nowhere. Very good. Next. वाजिद भाई, गौस भाई, आमिर भाई. सर मैं बोला ना. और मैंने बोला ना सर, अभी तो मैं कभी जिंदगी में बोलूंगा नहीं. नहीं बोल दिया नहीं, मैंने. तो मेरी बारी का इंतजार कर रहा हूँ सर मैं. बीच में घुस जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. He was nowhere in sight. Correct. He was nowhere in his sight. Next. They can go nowhere. They can go nowhere. Next. You can play nowhere. You can play nowhere. Next. Car was nowhere in sight. Very good. Nowhere. Next. We went nowhere. Very good. Next. I saw him nowhere. I saw him nowhere. Mr. Mubashir, goes. Make sentences nowhere. The police was nowhere that time. Correct. The police was nowhere that time. I search nowhere. I searched it nowhere. सर मैंने कहीं भी नहीं सर्च करा, इसका मीनिंग होता ना. I searched it nowhere. मैंने कहीं भी सर्च नहीं करा उसको. Cat is nowhere to be found. Correct. Nowhere. People Yes. are nowhere there. People are nowhere there. Good. Next. My friend in the garden, nowhere. Very good. Nowhere. Next. You can play cricket nowhere. You can play cricket nowhere. Anything else with nowhere? I take admission nowhere. I take admission nowhere. Admission नहीं हो, admission. Admission. Good. Nowhere. They were nowhere around the crime scene. Good. Anything else with nowhere? Nowhere restaurant near me. Nowhere is restaurant near me. Next. Nowhere is suitable. Nowhere is suitable. Good. All right. I want you to make sentences with now nothing. When do we use nothing? For things. कुछ भी नहीं. I have nothing. I have nothing to lose. मैं already नंगा हूँ. है कि नहीं भाई? आप लोग का sentence है ये. मेरे पास तो कुछ भी नहीं खोने के लिए. Make sentence with nothing. I have nothing. I have nothing in my mind. There was I'm- nothing in the shop. There was nothing in the shop. Next. There's nothing much to tell. Oh, nice. She has nothing much to tell. Next. There is nothing in the garden. There is nothing in the garden. Next. My study is nothing. I study nothing. And I keep on asking questions, sir, कैसा होने का portion का? Continue. I have There nothing to is say. nothing like to watch. There is nothing like to watch. Next. There is nothing in between us. There is nothing in between us anymore. Oh my God. Next.
I have nothing to say. I have nothing to say. Mubashir bhai, say something. There is Yeah, nothing. There is Chicken biryani. nothing to play games. There is nothing to play game. गेम खेलने के लिए कुछ भी नहीं, ना बैट है, ना बॉल है, ना स्टंप है, ना कुछ है. वाजिद भाई, सानिया मैडम, there was nothing Shakib, in the shop. there was nothing. In the shop. Good. Next. He wanted Yes. nothing. He wants nothing. There is nothing to eat. There's nothing to eat. There's nothing which you can hide. Something There's is nothing better than nothing. Something is better than nothing. Something is better than nothing. Aha. Nothing work is there. Nothing is there to work. Or nothing work is there. Good. There was Yes. nothing he could do. I had nothing to do. There was nothing to do. This course is nothing. Yes. I started nothing from. Do I everything. started from nothing. I started from nothing. I started from nothing. Correct. Zero से start किया था. There is And nothing in the shop. Are you still working on Hadoop, Mr. Abdul Wajid? Yeah. So are you working in a company or looking for this? No. Looking job. I'm not working right Okay. now. Have you ever worked before this one? Yeah, a little bit project installation, like. Nice. Are you still in touch with Mr. Khurram? Yeah. He has made his classes amazing. Huh? I saw him. Yes. On Khadi machine. Yeah, exactly. Khadi machine. What was the fee at the time when you would join him? 20,000. 20,000. And what is the fee now? 45,000 something. They are designed different type of course. They are designed. Okay. One of the courses there which is costing 2,25,000. Yes. See, just in 4 years, right? Yes. From 20,000 to 2,25,000. Yes. Great. Amazing. That man came into Pune and he was having nothing. And now he travels in Porsche, right? Yes. Amazing. This is called greatness. अरे यहाँ पे अपने इधर लोग बोल रहे कायगू करूँ मैं कर सकता क्या मैं ओ मेरे तो होऊंगा क्या कुछ नहीं होगा तेरे से तू कुछ नहीं होना तू से you are good for nothing. What do you mean by good for nothing? सुना कि नहीं ये phrase है बहुत बड़ा इंग्लिश के अंदर बहुत चलता ही है. Have you ever heard this before? No, sir. No. अपने स्कूल में बोलते थे टीचर तेरे से कुछ नहीं होगा तू जान दे कुछ नहीं होना तेरे से you are good for nothing. Okay, means what? Absolutely useless. सर ऐसा Alright, बोलने का guys, सर उसके let's go. सर ऐसा बोलने का उसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या बोलना पड़ेगा? Nothing बोल. He has nothing. He has कुछ nothing. और वो एक नंबर का भंगार है बोले तो he is good for nothing. Okay guys, so today we कुछ supposed नहीं करेगा तो हाँ तू कुछ नहीं कर सकता you're good for nothing बोल सकते हैं good for तेरी nothing. जिंदगी में तू कुछ नहीं कर सकता सिवाय विमल खाने के तो सर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ऐसा बोलना है तो he has